Hi, hello everyone. Good evening. Welcome to the yet another session at the DivyaAbility Foundation. We are heading towards a 3-day workshop on health and wellness. It would be a complete health and mind reset for you. We have three topics for entire 3-day workshop. So itinerary goes like day one would be how you can make daily changes, how you can change your daily regime in order to prevent different lifestyle diseases. And day two would be yoga, how different asanas can be done easily in order to make lifestyle a part of yoga, a part of lifestyle. And day three would be towards the mental health, how you can acknowledge different issues of mental health and how you Sorry, can I'm having resolve trouble it. with audio. Sorry, कौन सॉरी Shweta, is there anything we should look into? Actually, someone in from the participant is speaking. I think we can mute everyone. So one quick announcement. We're gonna keep all the participants on the mute. If something really bothers you, you can put down that in the chat or you can raise your hand. So we can have the discussion on that later word, and we will be having a Q&A session after our speakers would complete their part. So don't worry, if you have any concerns, any queries, you will be given time to discuss that. Starting again where I was ending. Yeah, so it's a 3-day workshop, and we are heading towards day one today. And this is about making daily changes in your regime and routine in order to prevent different lifestyle diseases with the help of with the help of Ayurveda. Yeah, before heading towards the session about the Divability Foundation, the Divability Foundation is an NGO registered under Section 8, Companies Act 2013. We work into different aspects like we give trainings and courses regarding students helping using system with JAWS and NVDA, helping preparation with competitive exams, and making mathematics as an accessible subject. Beside this, we have courses about stock market, digital marketing, and at other front we also provide scribe facility. We have a good pool pan India to write different competitive exams and academic exams too. Along with this, we also have scholarship, a branch of us. We collaborate with HTBF Foundation in order to give students scholarship for their higher education. And we do have a band which is named as Gandharv. And time to time we conduct these kind of workshops and webinars with different agendas and motives. And a brief about me: my name is Tarushi Agarwal. I am the training head at the Divability Foundation, and I look into the operations of different courses and trainings. And yeah, not taking much of the time, moving towards the introduction of our speakers. Today we have Dr. Yogita and Dr. Hitesh with us. Dr. Yogita and Dr. Hitesh both are bachelors in Ayurveda Medical Science and Surgery. They have been part of different international and national conferences. Dr. Yogita has published different medical journals and articles in the field, and Dr. Hitesh is MD in Ayurveda specialization. And yeah, you will be knowing more insights once they gonna start with the session. Beside this, I have two, three announcements. This is completely for education purpose. We are not providing any medical advice, and this is the general information. So, jo bhi we are going to discuss today is not a prescription. Go and consult with the doctor, with the medical profession out there. This is completely for the purpose of education, and I hope we are good to go. So please kindly welcome our guest, Dr. Yogita and Dr. Hitesh. Yeah, thank you, Tarshi. So, thank you. Okay, good evening, listeners. It's always a pleasure to be in the platform of DivyaAbility Foundation, and आज हम हमारे साथ एक फिर से एक और
एक बेहतरीन खास मेहमान है, एंड शी इज अ स्पेशली एबल्ड डॉक्टर ऑफ कोर्स, एंड definitely all of us are specially abled, but in a sense, to just bring that diversity in different abilities, Dr. Yogita is a victim of specific learning disability, and anyway it couldn't stop her perseverance, and resilience couldn't stop her becoming a doctor. And she will be talking about lifestyle disorders, and her insights will be in English, and I will be handling a bit of Hindi translations, and moderating this health talk. So welcome, Dr. Yogita. Hello, everyone. Am I audible? I'm getting a little trouble. Yeah, you are loud and clear. No issues from your end. Okay. Yes, yes. Hello, everyone. I'm Dr. Yogita, and I work as an Ayurveda physician in Ayurveda sector here in Karnataka. Uh, and thanks for inviting me today. I also request Dr. Hitesh sir to join me in between wherever it is necessary. So I would like it to be more interactive and Definitely, I would be there for you. yes. Huh. Let me then Yeah. So before starting the event, let Dr. me then Yogita, या आजकल ना एक डब्ल्यूएचओ का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि इन 21st सेंचुरी द बिगेस्ट पैंडमिक इज द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मोर देन द कोविड 19 दैट वी हियर्ड अ लॉट अबाउट इन 2019, जिसके बारे में हमने 2019 में कोविड 19 या आजकल जो बंगाल में निफा वायरस के बातें हम कर रहे हैं, उससे भी बढ़कर महामारी अगर 21वीं सदी को है तो वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है. सो इन दैट सिनेरियो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन आवर लिसनर्स व्हाट ए yes. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इज? Yes, definitely. I'm just taking that thing only. Like, if we say health upset or getting sick, we usually think that any infectious or the bacterial viral infections, that the first thing come to in our mind, right? But Yes. also the biggest risk to our health is that come from our daily habits also, like what we eat, how much we Oh, how we sleep, and how stressed we are. All of these also over the time like quietly harm our internal physiology and affects major organs like heart, liver, or the blood vessels, like the metabolism, or even the mind. So exactly. I mean, the scariest part that we may feel completely fine while this is happening inside our body. And most of the time, we don't even realize the damage until it becomes serious incident. That's how the serious it is. या एग्जैक्टली आप बता रहे थे कि ये जो वायरस बैक्टीरिया से हमें बीमारियां आ रहे हैं, लाइक मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू एंड ऑल, उससे भी बढ़कर जो हमारा लाइफस्टाइल है, मतलब हम सुबह उठ के रात सोते तक जो भी हम करते हैं, हमारा प्रोफेशनल में हो या घर में हो, तो ये सारे वजह से, मतलब ये सारे लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां आजकल आ रहे हैं, they are quite more significant, is what I can understand from your words. And how significant it is to know about this for your listeners, and being visually disabled, how victim we are, how significant it is for us to know about this, Dr. Yes, Yogita. definitely. This is the incidents are definitely significant. I hope you people can recall that over the past few years, we've been seeing more cases of young people suffering from cardiac arrest, right? And Exactly. sadly, many of them like seemed completely healthy and fit and fine, doing their life just like all of us. That's what if I can say it in a statistics, like cardiovascular disease is the topmost cause for the death now. And Exactly. same is true with the cancer also, Mm-hmm. and diabetes, respiratory disorders, and the stroke. These are such things that
एग्जैक्टली, leading cause या of death. डेथ इन द करंट सिनेरियो। आपने Yes. ठीक कहा डॉक्टर योगिता। एंड यू नो, डिस्पाइट बीइंग वेरी फिट, बहुत फिट होने के बावजूद, रोज जिम जाने के बावजूद, आजकल के युवा पीढ़ी हृदय संबंधी बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। और Yes. हम रोज सुनते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं सिर्फ 30 के उम्र में, या 35 के उम्र में, या 40 के उम्र में। तो ये सारे चीज आज एक हेल्थ अटेंशन की एस्पेक्ट बनी हुई है। एंड कैन यू जस्ट पुट सम लाइट ऑन what are the causative agents, or what are the risk factors you were telling about some Uh, diseases like cardiovascular disease, stroke and all? So how these are caused in this young generation? Yes, why I introduced this emergency introduction, that we often believe that these type of health emergencies happens all of a sudden, or we think that it happens at the older age. But in reality, there are underlying disease development that takes gradually over the time inside our body. So that we should be careful, or we should understand that there are multiple risk factors, and they accumulate inside our body over the time and finally lead to this cardiac arrest or the cancer type of scary emergency incidents in our life. This we must know. अंडरस्टैंड, या एग्जैक्टली। डॉक्टर योगिता, आप कह रहे थे कि हमें लगता है कि अचानक से एक दिन एक ठीक ठाक आदमी हार्ट अटैक से मर गया, लेकिन आपके कहना है कि ये रोज हमारे साथ धीरे 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 धीरे, ये एक स्लो पॉइजन जैसा, एक स्लो किलर जैसा हमारे लाइफस्टाइल की खराबी के कारण धीरे धीरे हार्ट डिसीज को कॉज करते करते एक दिन हमारा जान ले लेता है। इट माइट बी कैंसर, और इट माइट बी cardiovascular disease, or diabetes you mentioned recently. So, in a way, all these are slow poisons which are purely caused due to the defects in our lifestyle. That's what you're trying to tell. And Yes. can you put some more light on what are the things which are bad in our lifestyle as of now? ऐसी क्या गलतियां हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम हार्ट डिजीजेस के शिकार बन रहे हैं? Definitely, that is also the thing I'm going. I will explain it, but before that, we'll see what are the lifestyle disorders first, right? So, Yeah, exactly. yeah, a lifestyle disease. So we got an idea that the lifestyle diseases are those that arise from the way we live in our day-to-day lives. So, I think the slides are not being changed. We are on third slide currently, Shweta. Yeah, Dr. Yogita, please continue. yes. Yes, can you please change the slide? Vivid Yeah, illustration. exactly. On the left, a list highlights how daily habits like diet, inactivity, sleep, and stress affect our physiology, with symptoms often appearing late. The right side features a cartoon depiction of a man in a blue tracksuit, representing an unhealthy lifestyle. Surrounding him are harmful habits: unhealthy food like burgers and fries, too much sugar from donuts, unhealthy drinks including soda, passive rest with a game controller, and an unhealthy schedule of life. The illustration concludes by showing results, like a weight scale and measuring tape, emphasizing the consequences of these choices. Generated by Pixtree.ai. Yeah, recently we heard about the Yes, description of the slide, first slide. And I um, think we also have It's covered the the second slide. second slide. It's the second slide. This Yeah. Yeah, Now impactful third let's report slide, go there. sorry. addresses Yeah. raising Yeah. incidence in the young population. A prominent pie chart details leading causes of death, with cardiovascular diseases and other conditions each at 30%. The visual narrative unfolds with person 2, looking distressed and on the phone, kneeling beside an unconscious person 1 on a paved path. In another panel, two paramedics are seen providing urgent care, one performing CPR and the other assisting with a breathing mask for a man lying on the ground. This combination powerfully illustrates the critical health challenges highlighted by the statistics. Generated by Pixtree.ai. Exactly, Dr. Yogita. Recently, you said about the statistics, the brutal numbers, like cardiovascular diseases contributing to 30% of the deaths that we have overall in India. And yes. now you're telling about some very common lifestyle disorders which are around us. Can you put some more light on that? Yes, before that, I think next slide will be. Yeah. Yes. Presented by DivyaAbility Foundation, this insightful slide delves into 3 lifestyle diseases, highlighting that these conditions are not sudden, but rather an accumulation of risk factors from our daily lives. A detailed diagram illustrates contributing factors like unhealthy foods,
sedentary habits, environmental toxins, and socioeconomic aspects, alongside clinical elements such as mental health disorders and genetics. These influences lead to conditions like liver steatosis, type 2 diabetes, and obesity. The powerful message, prevention is better than cure, is prominently displayed, urging proactive health choices. Yes, Exactly. Yeah, prevention is better than cure. Yeah, Yogita, I want to know yes, from you. as it said in the slide, and it's beautifully explained for you. And I'll more elaborately, I'll try to tell it. Yes. I was telling that what are the lifestyle diseases? That Yeah. we witnessed it could be as minor as allergies, the constipation, sleeplessness, anemia, the irregular menstruation, body weight gaining or the loss. All these also a kind of lifestyle disorders. Okay, but Yeah. we used to neglect these to care in our daily routine because uh, thinking that Exactly. they might Hmm. nothing harmful, or we can manage it, or like this. Yes. And also, we also seen that serious problems like heart disease, diabetes, Cancer. Yes. Yes. cancers type of Hmm. issues, and these are also lifestyle disorders. Now, what we consider. Yes, exactly, exactly. I think the highest burden of the diseases in the current healthcare system is of this non-communicable diseases, which are also called as lifestyle diseases. जैसे कि योगिता जी ने बता रहे थे कि खून की कमी, which is called as anemia, और issues in passing the stools, जिसको constipation हम कहते हैं, और allergy. तो ऐसे छोटे छोटे बीमारियों से लेकर बड़े बड़े बीमारियां लाइक कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस comes into the spectrum of lifestyle disorders. Mhm. And moving ahead, next slide, please. This is you just asked, no, what is the risk factor? I Yes. was hoping to explain it in like this. Like if Uh, you consider our body, uh, just imagine our body as a car. Okay, if you don't feed it with a good quality of fuel and not riding it or keeping your vehicle parked at the same place for a longer time, or riding it too much without giving it for a service, then what's going to be the condition, right? It will these be uh, spoiled. Yeah. yes, these conditions make the car brake in the middle of the road. Just like Yes. that, our bad habits makes the body collapse later in the life, in our life. As I said, a bad food is like a bad fuel to our Your body. That's body. what I try to uh, Yeah, tell. yeah, it's really a beautiful simile that you have used, डॉक्टर योगिता. जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारा मानव के शरीर एक कार जैसा है, और जिस प्रकार कार के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है, तो ऐसे ही हमें अच्छा वाला स्वास्थ्य खान पीन करना होता है, खाना मतलब फूड कंज्यूम करना होता है. और जिस प्रकार कार को एक ही जगह पे ज्यादा दिन तक रखने से भी वो खराब होता है, और ज्यादा चलाने से भी वो खराब होता है. सो सिमिलरली वी शुड ऑल्सो, just like we do take care about the servicing and maintenance of the car, we should also take care of our body. तो ये होता है the importance of lifestyle. So Yes. yeah, you're speaking about diet, the fuel to the car. Mm. तो ऐसी क्या चीज है, मतलब what are the things that act as good fuel to our body? Yes, I try to list out some common Yes. mistakes or the common I unhealthy think habits next that slide, we. Shweta. uh, so these are the few common diet habits, bad diet habits. Unknowingly or unknowingly, we have adopted all these in our day-to-day life. So rather, we know that we should not eat oily foods or the fried items or chips, puri. All these we know, and we'll be hearing this since our childhood, right? But we must also know few of the main things that we unknowingly or knowingly we are doing it in our day-to-day diet habits. I try to Exactly. give some of the information. So
we will be aware of this. Like I'll start with the refined oil in as a part of our daily cooking Yes. oil, right? We usually in our kitchen we have refined oil for in cooking. I Yeah. think yes, Preparing food. Yes, yes. and just like that, we also daily use the refined carbs. I mean to say, the polished rice or the polished wheat that in the form of the maida. These are lack of the fibers or the micronutrients which we actually required. And also in Ayurveda, also it is quite popularly told everywhere that using newly harvested right or the wheat that also not good for Good the for health. yes Yeah. for the regular use especially. So Yes. just to make sure that ingredients like rice or the wheat, these kind of things, just make sure it is they are at least a year old, so it is beneficial for us. Yes. And another one thing is that we started using jaggery instead of sugar in our Diet. diet as a healthy Yeah. concept. But Supplement. however, the high glycemic index is there in jaggery also, uh, but quite better than the sugar Yeah. in of the iron content and Exactly. Yes. such as the mineral things. But still, we should always use sweet in a very minimum, possibly minimum Quantity. quantity in our daily life. And another like famous habit we all have that sprinkling the salt on our on the tip of our food plate, and it is also not really good. Any now Yeah. talk about our shopping habits, like any packed items, ready to eat food uh, uh, that we prefer from the shop. No, yeah, those Yeah. are Instant contains foods. Yes. definitely like Mm. preservatives and antacids, kind of harmful substituents or the substances, and Yes. also some of the ingredients like uh, what we use, the turmeric or the chili, especially in this powder forms, they are really adulterated with the synthetic uh, uh, substituents. So these definitely going to cause for the carcinogen in the future. Lifestyle So disorders. Yes. uh, this is about uh, Dietary food factors that has to ingredient. be considered. Exactly, डॉक्टर योगिता, आपने अभी बताया कि आई विल पुट Yes, इट sir. इन अ नटशेल इन हिंदी दैट ये जो भी हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले चीजें हम यूज करते हैं, चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, खास तरीके से नए नए उगाए हुए चावल और गेहूं को आयुर्वेद में यूज करने को मना किया हुआ है. आई मीन वी शुड नॉट बी यूजिंग फ्रेशली हार्वेस्टेड राइस और व्हीट बिकॉज उनके अंदर एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है. तो इफ वी कैन कीप इट फॉर 6 months और एन ईयर देन वी कैन यूज देम. एंड यू ऑल्सो पुट सम लाइट और आपने ये रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड कार्ब के बारे में भी बताया. रिफाइंड कार्ब का मतलब होता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिस चीजों को बार बार पॉलिश किया हुआ होता है. जैसे कि आजकल हमें मार्केट में चमकता हुआ गेहूं मिलता है, चमकता हुआ चावल मिलता है, चमकता हुआ शक्कर मिलता है. सो वेन एवर इट इज शाइनिंग, इट डायरेक्टली मीन्स दैट इसके ऊपर पॉलिशिंग किया हुआ है. एंड वी एनकाउंटर विद वेरी कॉमन डिसीज कॉल्ड थाइमिन लॉस ड्यू टू यूजिंग दिस काइंड ऑफ रिफाइंड कार्ब एंसेफेलाइटिस, वर्नेक्स एंसेफेलाइटिस विच इज कॉज्ड. ये एक ब्रेन की बीमारी है. आई मीन टू से इट इन मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो ये पॉलिश्ड चीजों को खाने से दिमाग की Uh, कमजोरी भी होता है. एंड यू ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट जैगरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो ओवरऑल डॉक्टर योगिता, इन चीजों से हम uh, कैसे बचे? नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हेन वी रियलाइज दैट एवरीथिंग इज पैक्ड इन द मार्केट, एवरीथिंग कम्स विद सम प्रिजर्वेटिव्स इन देम, तो इनको हम कैसे रोकेंगे? व्हाट आर द प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज दैट कैन वी अडॉप्ट to save ourselves from this dietary bad conducts? yes. Next slide, please. Uh, Actually, no.
like giving importance to these ingredients wise also. And also we shouldn't forget that we should give the importance for the pattern we take. I mean to say, regular food intake is better, and I mean irregular timing set of taking the food is not a good thing. And heavy meals, taking heavy meals just before the bed is also not good. These are the few habitual things we must improve it. And Yes. I'll as you asked for me, I'll try to uh, tell Yeah. what possibly we can make, or the Do. of the Mhm. gradual changes is by starting from understanding our stomach capacity. Okay, so Okay. we should understand the food intake based on their own digestive capacity. So, a simple step I can say, if you Hormone. consider our stomach in a three parts, and they said that One part should be. one part should be given for the solid food, and one part should be given for the liquid foods, and one should be emptied like that. So Yeah. in that solid part, I will give you some idea how you can take, and uh, like how healthy we can include. Okay, so just consider that your palm area in your hand. Uh, Take it as a measuring instrument. So this much palm area, this much you can have protein, that too uh, As a solid part. as a solid part, along with the non-refined carbs, Yes. like whole wheat grains or the red rice, barley, millets. Millets includes like ragi, navane, bajra. These type of the food ingredients are really best and rich in micronutrients, also rich in fibers and proteins that are helps nourish our heart, or the or any like major organs. So, like any nutritional deficiencies such as anemia, osteoporosis, or even that vitamin B12 is also now very much common for everyone. Exactly. Yes. These type of uh, Yeah. like Health dietary non-refined habit. food, yes, these helps us reduce unwanted fat deposition also, and as avoiding we can avoid cardiac arrest kind of diseases. So, and then Exactly, Dr. Yogita, just now you gave a great insight from the ancient science of Ayurveda. आप बता रहे Mhm. थे कि ठीक टाइम पे खाना खाना एक इम्पोर्टेंट चीज है जिस पे हम आजकल ध्यान नहीं देते हैं. वी शुड consume food to maintain that circadian rhythm. We should consume food every day in the same time, and we should also focus on the quantity of the food. कितने हम खा रहे हैं इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है. तो Exactly. हमेशा हमारा कैपेसिटी, डाइजेस्टिव कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करना एक चीज है. आप अभी बता रहे थे विद ए सिंपल फॉर्मूला दैट पूरे हमारा पेट को हम तीन भाग में डिवाइड करना चाहिए. उसमें सिर्फ एक पार्ट को हम सॉलिड फूड से भरेंगे, दूसरे पार्ट को हम लिक्विड फूड जैसे कि पानी हो या छाछ हो, बटर मिल्क, ऐसी चीजों से भरेंगे, और तीसरी पार्ट हवा में छोड़ देंगे. So there are Hmm. three states of matter: solid, liquid, and gas, and the stomach has to be divided equally into all the three states. Yes, So exactly. that's really a great insight that we got right now. And now, other than these dietary habits, what can be the other risk factors in the form of lifestyle that we are prone to be a victim of in the current days? And Um, Shweta, next slide, please. yes. After the uh, um I mean, the diet plays definitely a major role here. Uh, Second to that, the sedentary lifestyle is again a major role in creating the Lifestyle disorders. mental Yes, yes. disorders. So, uh, in this sedentary lifestyle, So, we witnessed that the fat deposition we started to see around our abdomen and neck. I hope so, yes. right? Yes, yes. So before that, Dr. Yogita, what exactly is a sedentary lifestyle you are
mentioning Yes, about. that I was about to tell. Yes, It's a behavior or the by chance purposeful. Hmm. unconsciously we may spend more time at one place in a single prolonged position. This is what we do, knowingly or unknowingly. So when we sitting for a study or working with the computers, like more than like at least minimum 3 2 hours. Uh, so we spend sitting Yes, idle at a one place. Uh, or sometimes by choice laying down keeping mobile for a long time. This uh, what makes our body posture. Yeah, body, yeah, even exactly. body posture and the deposition of the Fat in fat, the. what I said. So एग्जैक्टली uh, सो डॉक्टर योगिता यू आर टेलिंग सेडेंटरी लाइफ वो होता है जहाँ पे मतलब हम एक ही जगह पे या एक ही स्टाइल पे या एक ही पोस्चर पे बहुत देर तक रहते हैं. दैट इज uh, कॉल्ड एज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, yes, जिससे हमारा बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है. that यस, too, यस. like it's become habit that even after just right after food intake, this we started to lay just like that. So एग्जैक्टली. हम्म. uh, uh, you know what happens, even though nutritious food, what we discussed, if we consume the nutritious food also, uh, the body starts deposit the form of fats rather than burning it into the calories if we do the sedentary lifestyles. So that is what how it contribute for the diseases later. So एग्जैक्टली exactly, डॉक्टर योगिता, मतलब आप कह रहे थे कि खाना पीने के साथ भी हम क्या करते हैं दिन में ये भी मैटर करता है. अगर हम yes, एक ही जगह पे बैठे बैठे, स्पेशली फॉर ए कॉजन फॉर ऑल द आईटी फील्ड वर्कर्स एज वेल एज all those workers who sit in an office and work, I mean, who keep on sitting, मतलब जो बैठे ही रहते हैं दिन भर बहुत घंटों yes. तक एक ही पोस्चर में मोबाइल पकड़ के पढ़ाई करना हो या चैटिंग करना हो, रील्स वगैरह देखना हो. सो दिस इज आई थिंक द one of the significant alarm that our youngsters might be getting through this session, that Mm, activity, keeping ourselves active matters most. really, really. So the we will see what kind of the Yeah, disease next slide please. to arise. So this is not a really serious one, like obesity, diabetes, hypertension, cardiac disease, and that stroke. These are really uh, these going to occur is because of this kind of the sedentary lifestyle. So it is really required for the minimum body activity in between. So even the body posture becomes straight, like started looks unhealthy. It looks like overall the quality of life is like a hampered along with the diseases also. So I also add this point also, like Yeah, infertility is one of the thing. This is also exactly. because of Mhm. this sedentary The lifestyle. prevalence is increasing day by day in the Yes. youngsters. या या तो डॉक्टर योगिता आप कह रहे थे कि एक चीज तो मोटापा है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से कॉज होता है. ओबेसिटी इज ऑफ कोर्स Mm, 38% prevalence we have in India as of now. So it is also contributing to secondary diseases like cardiovascular disease, जिससे हृदय संबंधी बीमारियां आ रहे हैं, जिसके जरिए हमें हार्ट अटैक जैसे हादसाओं को भी हमें झेलना पड़ रहा है. अदर देन दैट यू ऑल्सो टोल्ड अबाउट ए साइलेंट किलर, मतलब एक सोशल mm, स्टिग्मा भी हम बता सकते हैं. इनफर्टिलिटी, mm, especially in female as well as in male. As female, it's caused due to PCOD and PCOS. So can you put some more light on these factor? about the Yeah, yeah, infertility, or how can we prevent all these things? How can yes, we escape from these risk factors? yes. That's one important I think thing. next slide, Mm. Shweta. So, so it's some for some people it is inevitable because one will sit, one has to sit in front of the desk and should do the work, right? So for them, it is really alarming. Now, if we get the awareness, how we can avoid
or minimize the from happening as a bigger issue. Okay, so I'll just give few brief ideas how we can start improving our health. Okay, so I say for a beginner, you start from a brisk walk as an activity started in your life. Okay, like Okay. mm, if you are busy with the work, or you are under the continuous desk work, so you can start changing the position in between, or correct the spine posture. Uh, Try doing sitting exercises in between, and start slowly moving your neck, and even the hand movements or the spine bending. Uh, just like this, also some of the few exercises of legs, or if possible, take a break and walk in between prolonged sitting. So these helps us body for moving for a little bit. So this is going to helpful. And एग्जैक्टली डॉक्टर योगिता यू आर टेलिंग सम ऑफ द रेमेडीज, मतलब जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप बता रहे थे ब्रिस्क वॉक बहुत जरूरी है हर दिन सुबह उठ के। हम दौड़ने की भी जरूरत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड वी कैन नॉट रन, बट येट वी कैन चूज सम area where we have practiced mobility, and within the room, maybe within a park where we usually go, ऐसे जगह ढूंढ के वहां पे सुबह सुबह वॉकिंग करना बहुत बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर दोज हु आर विजुअली चैलेंज्ड। हालांकि अलग से स्टडी तो नहीं हुआ है विजुअली चैलेंज के ऊपर, लेकिन जहां तक मेरा कॉमन सेंस कहता है, ओबेसिटी इज हाईली हाईली प्रिविलेंट विद दिस विजुअली चैलेंज्ड कम्युनिटी। तो उसके बाद आप कह रहे थे कि अगर इनएविटेबल है काम करना डेस्क के साथ, तो वी शुड बी doing some chair exercises. Ministry of Ayush have also launched an application regarding yoga, wherein they yes, have introduced chair yoga. चेयर में बैठे बैठे हम कैसे योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कैसे कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू टोल्ड अबाउट नेक रोटेशन एंड फ्लेक्स क्विक रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस विच कैन बी डन by sitting within the comfort of our office desk. तो yes. I think they are really insightful जो आप कह रहे हैं। Also, like it is about in office when while we working. If we start our day beginning with our early waking up, and then Yeah. doing abhyanga, like anointing oil daily and exposing to the sun, and doing vyayama is also told in our dinacharya. So in the form of yogasana, it is really going to help in a bigger, Yes. like Yes, yes. most of the In a disease. greater way, हाँ, exactly. या डॉक्टर I योगिता, think, आपने अभी अभी एक और सिग्निफिकेंट चीज बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कि आयुर्वेद का एक सीक्रेट ही हम मान सकते हैं, जिसका नाम था अभ्यंग। अभ्यंग yes, का मतलब होता है हर दिन जॉइंट्स के ऊपर, बॉडी के जो भी जॉइंट्स है या पूरे बॉडी के त्वचा हाँ, के ऊपर नेचुरली अवेलेबल ऑर्गेनिक ऑयल को लगाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है, हर दिन हमें करना होता है। अक्सर हम इसको सिर्फ त्योहार के दिन करते हैं, दिवाली के दिन या गुड़ी पड़वा या अदर फेस्टिवल्स के दिन हम करते हैं, लेकिन इसको रोज करना है। दूसरा चीज आपने बताया व्यायाम, जो फिजिकल एक्सरसाइज। व्यायाम हाँ, का मतलब हर बार जिम जाना ही नहीं होता है, ऐसे हाँ, ही घर में ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जैसे हमारा मसल्स को स्ट्रेच करना, फ्लेक्स करना, फ्लैंक्स करना, बाइटेक, जो हिंदी में हम बाइटेक कहते हैं, सिटअप्स करना या पुशअप्स करना, ये चीजों को हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जरूर इनकॉर्पोरेट करना है। एंड हाँ, ऑल्सो योगिता, नाउ आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स सम ऑफ द मेंटल रिस्क फैक्टर्स, जो आजकल हम सुनते हैं कि स्ट्रेस की वजह से भी हमारा लाइफस्टाइल्स बढ़ रहे हैं। सो व्हाट यू से ऑन दिस? एंड श्वेता, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, exactly. Just like I said, like a food as a fuel, and a sedentary life is like a prolonged parking car. Like just like these, a mental health is also a very important thing, which plays a Define our key health, role. yeah, yeah, exactly. Uh-huh. Now, like overstressing, it's like another big issue that causes lifestyle disorders.
So Exactly. we know over intake or the laziness, these causes fat deposition. But like anxiety, stress, depressions, these are also lead to the fat deposition, especially in the cardiac Wow. arteries. Yeah. Mhm. Not only that, if you like if you take like a chronic stress for a longer time, it makes imbalance our hormones or the insulin, like overall, like Exactly, brain yes. neural pathway, these kind of the disturbances, these Yeah, gut brain axis. uh, Exactly. Dr. Yogita, you recently, again brought us to a another significant issue. एक uh, बेहतरीन जरूरी बात पे आपने हमें ला खड़ा किया है। हमें मतलब आज तक हम यही सुनते आ रहे थे कि सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ही फैट बढ़ रहा है, बट आपका कहना है कि हमारा दिमाग भी अगर डाउन है, दिमाग में कोई फियर हो, जिसको हम भय कहते हैं, या कंफ्यूजन हो, या अगर दिमाग उदास हो, तब भी अगर हम खाना खाएंगे तो यू आर टेलिंग वो भी फूड फैट के रूप में हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लगा है। definitely, yes. एंड दिस ओवर स्ट्रेस इज ऑल्सो, मतलब वो हमारे हार्मोन्स को भी हार्म कर रहा है, जो uh, मेटाबॉलिज्म में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मतलब मेंटल स्ट्रेस के जरिए शुगर का भी, मतलब डायबिटीज का भी ऊपर नीचे होने की चांसेस है। Yes, definitely. That is what. And if once this imbalance in the hormones occurs, and it will take 2 months to recover, body to get recover. So it's not a it's not a easy thing. So just try, just be careful not to take repeated Yeah, yeah. mental And illness. Dr. Yogita, how about preventing these situations when they becomes inevitable? Uh, Next slide, there Shweta. about mental health, actually there is going to be another session by the expert tomorrow, and I'll also deal with a few of the preventive aspects from Ayurveda side. Okay. uh, Yes. Firstly, the main thing is uh, one practical thing we can adopt in our daily life is that practicing of nasya in our day-to-day life. I'll say how it can be done. Okay. So like with the help of any medicated oils, or even the organic or coconut oil also, started with the 2 drops of oil into our nostrils each, like every day you can done this, and uh, try to spit it out from the throat, from the mouth. Exactly. This is one way of a nasya practicing in our daily life, and it is so much beneficial in so much effective in bringing Preventing, yeah, uh, mental. Yes, mental yes, yes. health. So, along with this, you can also practice pranayama. It is a breathing exercises. This also you can adopt in your day-to-day life. So, uh, that is little about the mental health. एग्जैक्टली, डॉक्टर योगिता, आपने एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हमें अवेयरनेस दिलाया अभी, अबाउट नसिया, विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थेरेपेटिक एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा, जो हम पंचकर्म बोलते हैं आयुर्वेद में, उसमें एक कर्म होता है नसिया। तो इस नसिया को हम रोज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एंड द आउटसेट अगेन आई वुड लाइक टू रियटरेट द सेम कॉशन, ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, एक सुझाव है, और आप नियरेस्ट आयुर्वेदा डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही इसको प्रैक्टिस करें। Uh, नसिया में हम एक कोई भी ऑयल हो, कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल हो, या अणु तैल इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस विच इज yes. इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। इसको हर एक नोस्ट्रिल में दो दो बूंद डालना होता है, और उसको अंदर की तरफ खींचना होता है। जैसे ही हम खींचेंगे वो गले में आएगा, तो गले में आने के बाद या आप उसको थूप सकते हो, अगर गले में ना भी आए तो भी ठीक है। ये सिर्फ दो दो बूंद हम रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मोस्ट Yes. ऑफ द फ्रेंड्स who are suffering with retinal disease, who might have gone to Kerala or anywhere, they might have definitely undergone this treatment, because this is considered as the best treatment that can treat almost all diseases of brain. Okay, and Yes. that's a nice input from you, Dr. Yogita. And can we move to the next slide, Shweta?
I just try to Yeah, introduce the awareness about cancer. It's also a lifestyle disease. It can also be considered as a lifestyle disease. Yes, even I mean, there are few cancers they are originate from the genetics that I agree exactly. that we cannot Be, uh, even modified. huh, Yes, but still, if any of our family members or we know the history of our family members that are affected with the cancer, then we can we should prevent it. not Yeah, neglect it, and we started taking precautions about that. exactly. So that Yes, yes, hopefully it will going to we are able to prevent it in the future. So yes. few are Next the slide, Shweta. main cancers, like cervical cancers or the breast cancers, even the IBS kind of, I mean, irritable bowel syndrome. It like if it looks like a simple, but it may end Exactly, up in taking a away the life of serious many. issue like a colon cancer. So we should not neglect research and start taking preventive aspects. So for the cancer, if we say prevention, it is more like a it should be a disciplined life. What and all we discussed. It is from the diet or from the exercises and the mental related health. It Aspects. should be consistently. If we performed, we will we may We can going to prevent avoid these cancer. type of Yes, yes, exactly. serious things. So Exactly. Thank uh, you, Dr. Yogita. I think you have yes, concisely and explained of course about we all know that cancer. cancer having the risk factors like Yes, 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 Yogita. Shweta, next slide, please. एग्जैक्टली डॉक्टर योगिता, अभी आप बता रहे थे कि कैंसर एक बड़ा बीमारी है जो आजकल आजकल बहुत प्रिविलेंट है। हम रोज सुनेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर हो, कोलोन कैंसर हो, या किसी को लंग कैंसर हुआ, इसोफेगियल कैंसर हुआ। तो सारे कैंसर का भले ही एक चीज तो रिस्क फैक्टर है जो फैमिली हेरिडिटी के साथ आता है, लेकिन दूसरा चीज उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारा लाइफस्टाइल होता है। एंड इवन वी कैरी दिस रिस्क फैक्टर, there are chances with which we can prevent this कैंसर थ्रू आवर लाइफस्टाइल। जैसे कि आपने बताया, हेल्थ, आपने मतलब डाइट और एक्सरसाइजेस, अवॉइडिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एज वेल एज कीपिंग आवरसेल्फ मेंटली healthy. I think we lost connection from Yogita, Dr. Yogita. Next slide, Shweta. yes, Yeah. Dr. yes, Yogita, are you but there? Yes. yes, I rejoined. Yeah. Thank you. Thank you. Just I concised whatever you I think said. I pretty much covered today. Yeah, definitely, definitely, Yogita. I think we are all benefited a lot in terms of the lifestyle that we have to correct. I mean, भारत अभी एक डेमोक्रेटिक डिविडेंड कहते हैं हम लोग। वी आर पासिंग थ्रू अमृत काल, जिस प्रकार हमारा भारत सरकार अक्सर कहते हैं कि इन इंडिया द पॉपुलेशन बिटवीन 16 टू 35 कवर्स मोर देन 60%। इसका मतलब है 80 करोड़ से ज्यादा लोग, युवा लोग भारत में रहते हैं। सो डेफिनेटली वी शुड नॉट बी losing our life for this negligible or this preventable causes like lifestyle, diet हो या sedentary lifestyle हो या anxiety, depression, ऐसी चीजों में हमें कभी भी नहीं फंसना चाहिए। सो आयुर्वेदा डेफिनेटली हेल्प अस टू अडॉप्ट ए होलिस्टिक लाइफस्टाइल। एक सर्वांगीण स्वस्थ जीवन जीने के लिए आयुर्वेदा बहुत बहुत मदद करता है। विद दिस I'd like to thank you on behalf of DivyaAbility Foundation, and it was really inspiring to talk with you despite your own difficulties, despite carrying that neurodivergence that you have. You really tried to enlighten my brothers and sisters of visually disability community. Thanks a It's lot my for that. pleasure. Yes. Definitely, it was wonderful. And you helped me a lot. You explained it very well. I think I hope it was better conveyed to the audience. Uh, yes, thank you so much. I really That's thank to this platform. Uh,
That's really our pleasure, Dr. Yogita. And I think, Tarushi, we are good to go for Q&A session now. We can open the mics, and if there are any questions, we can take up them now. Sure, Dr. Hitesh. First of all, thank you, Dr. Yogita and Dr. Hitesh. Even my so many personal doubts got cleared between the session, and you guys really explained all the aspects, either it be diet, exercise, mental health. And मुझे लगता है we got a very pretty clear idea of these 3-day workshop, as tomorrow we are going towards yoga and day after tomorrow we are going towards mental health. So I think you guys have laid an amazing foundation for this. And really, thank you, Yogita. You break down all the concepts and stigma very, very easily. And point A and point B, your solutions were really adaptive. I think अगर अपन सोच लें है ना, we think if we take a determination, whatever you have suggested can be adopted by everyone, in each of us here. Yes. And not taking much of time, Shweta, can we have people on unmute? Can we allow them to ask the questions? Yeah, they can. We have one hand raised. Samyak. Okay, Yeah, good Samyak, you evening. can ask a question. Yeah, am I audible? Yeah, Yeah. you are audible. And yes, you can keep the first slide if possible Yeah. for now. Yeah, so first of all, thank you so much, Yogita ma'am, Dr. Yogita ma'am, and Dr. Hitesh sir for this wonderful session. My question is, what will be the symptoms if one is going to have a cardiac arrest or any kind of, life-threatening disease? Okay. Because हमने देखा कि ये डिजीज जो है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती है और हमें पता नहीं चलता है. सो अगर आप कुछ That's a symptoms. really nice question. Easy signs, Yeah. early signs क्या Yeah. हैं जो हम pick up कर सकते हैं कि वो situation इतनी terrifying ना हो जाए? Yes. Yes, exactly. सम्यक आपने बहुत अच्छा और नीड ऑफ द आवर जैसे क्वेश्चन पूछा. There are three classical signs of any cardiac disease for that sake. One is palpitation. आपका धड़कन धीरे 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 बढ़ने लगता है. You can feel it. Even when you are in a peace and calm area, you are able to listen to your heart sound. That it is then it is called as palpitation. ये एक साइन हो सकता है द रिसेंट ऑनसेट ऑफ कार्डियक डिजीज का. दूसरा है रेडिएटिंग पेन इन द लेफ्ट शोल्डर. धीरे धीरे कार्डियक रीजन जहाँ पे हमारा दिल है, हृदय है, वहां पे पेन होता है और लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर में वो पेन रेडिएट करता है. ये भी एक क्लासिकल साइन ऑफ एनीथिंग अबनॉर्मलिटी इन आवर हार्ट. और उसके साथ ही साथ आपको सांस लेने में भी तकलीफ होता है. इफ यू आर फीलिंग ब्रेथलेस ऑन एंड ऑफ, आपको लगता है कि आपका सांस छोटे हो रहे हैं, इफ यू आर ब्रीदिंग मोर इन अ सिंगल मिनट. और एक और चीज है, हम आयुर्वेद में बोलते हैं आरोहण आयासा. इसका मतलब है कुछ ही सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप अगर थक जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट्स द रीजन वाई वी ऑलवेज रिकमेंड टू यूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट. इस ये लिफ्ट और एलिवेटर्स को यूज करने से ऐसे बहुत बीमारियां साइलेंटली हमारे अंदर बढ़ जाते हैं. अगर आप रोज लिफ्ट स्टेप्स स्टेयरकेस यूज करते हैं, तो आपको फर्स्ट फ्लोर चढ़ने के बाद ही अगर आप थक रहे हैं, दैट इज रियली एन इंडिकेशन ऑफ any lifestyle disease within your body, and significantly pointing towards heart disease. And anything from Dr. Yogita you can add to me. Yes, definitely. I actually these serves as already signs and symptoms of cardiac disease. But this whole session, I was mean to say that even before reaching that kind of symptoms, signs and symptoms, we should be aware that like slight changes in our body, like we are getting deposition of fat deposition Around the more belly, yeah, yeah. around the belly. Yes. And Below the cheeks, exactly. yes, we get usually we get uh, what you said, difficulty in taking breaths, in taking stairs. Exactly. These are the small and minutest things we often neglect. Exactly. Those The early signs early signs. These if we has to be neglect tackled. Yes, yes. if we don't give the precautionary Attention. measures, that will lead to the cardiac issues. Major cardiac diseases. Exactly, exactly.
I think we have answered your We have question, Samyak. completed the Yeah, circle yeah. अपन ने जहाँ से You start किया था. So lifestyle changes, as Hitesh sir mentioned कि lift आप थोड़ा सा avoid करना शुरू करो, taking stairs. तो और changes रोज अगर फिजिकल छोटे एक्सरसाइज छोटे. करना होता है। देखो, आप एक दिन में 10 बैठक लगा सकते थे, या बैठक मतलब जानते हैं ना, सिटअप्स, या दस yes, yes, डिप्स yes. लगा सकते हैं, और वो अभी 5 में आ गया, तो इसका मतलब है योर हार्ट हैव गॉन वीक, बिकॉज हार्ट इज द ऑर्गन दैट गिव्स अस एंड्योरेंस। एंड्योरेंस और पावर में फर्क है। सो एंड्योरेंस इज मस्ट फॉर यूथ मोर देन बीइंग पावरफुल। अगर वो एंड्योरेंस हमारा घट रहा है, तो ये क्लियरली इंडिकेटिव ऑफ heart diseases, underlying heart diseases. Okay, sir. Thank you so much, sir, for that. Sir, I have one more question, one last question, if you allow me to ask. Yeah, yeah, please go ahead. Yeah. So, sir, I have studied about education systems in foreign countries. Like many foreign countries, teach their students how to perform CPR in very early age, right? In the schools and the colleges. How to? I couldn't, pardon me, how I How couldn't to listen. perform CPR. 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 Yeah. CPR, okay, okay, cardiopulmonary resuscitation, Recitation, okay. yes. So, foreign many in many foreign countries like Singapore, US, Yes, Japan, yes, people know how to perform CPR is emergency situation yes, arise. yes, yes. सो बट इंडिया में सीपीआर को लेके उतना अवेयरनेस नहीं है सो मेरा नहीं ये है। क्वेश्चन है कि अगर सिटीजन्स को सीपीआर का ट्रेनिंग अगर लेना हो या सीपीआर आना हो तो हम्म। कहाँ से लिया जा सकता है? Actually, I may have to give a diplomatic answer for you, because we cannot directly compare everything in India with Western countries. ये एक गलती हम करते हैं, क्योंकि उनका लिटरेसी रेट 97, 98, 99% पे है। तो उनको बहुत सारे कॉमन सेंस पता हुआ रहता है, उसके बाद वो सीपीआर वो लोग सीखते हैं। मतलब, I want to highlight one crucial thing. Before learning CPR, we must have to learn at least some of the common sense kind of things about cardiac health. अगर वो नहीं पता है, और हम सीधे सीधे सीपीआर के ऊपर ध्यान देते हैं लोगों को, तब फायदे से ज्यादा नुकसान होने के ही संभावना ज्यादा रहता है। सो दैट इज द रीजन वाई our even Ministry of Health and Family Welfare have not yet taken this riskier, riskier step to teach CPR in the schools. आजकल हमारा लिटरेसी रेट, जहां तक मैं पढ़ रहा था, इट्स एट 74% इन इंडिया. सो वी हैव हम्म, टू improve our जनरल लिटरेसी रेट, देन वी हैव टू इंक्रीज अवर साइंस लिटरेसी रेट. आजकल ओके. साइंस के बारे में पढ़ने वाले लोग ही बहुत कम हैं। स्टेम हम्म, एजुकेशन में भारत बहुत पीछे है। लेस देन 15% ऑफ इंडियंस प्रिफर टू गो टू स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन का मतलब होता है आई साइंस, नो, या. टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो इस सिनेरियो में मुझे नहीं लगता है इट इज सेफ टू सेल सीपीआर थ्रू यूट्यूब वीडियोस, और एनी काइंड ऑफ जनरल मास एजुकेशन। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसे दिन जरूर आएगा। वी आर फास्टली मूविंग टुवर्ड्स ए डेवलप्ड नेशन। जिस प्रकार भारत सरकार सपना देख रहा है, by 2047, if we can become a developed nation like any other Western countries, then we can have this approach of teaching. There are multiple kind of preventive first aid things like एक कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन एक हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे लाइफ सेविंग मेथड्स है जिसको हम स्कूल के जरिए टीच जरूर कर सकते हैं. And coming to second part of your question, if you really want to study these things, you must have studied science in your 10th standard as well as 12th standard. तो आप सर्टिफिकेट कोर्सेस है बहुत सारे, इंटेंसिविस्ट टेक्नीशियन कोर्स, जिसमें आपको सीपीआर, डिफिब्रिलाइजेशन, ऐसे लाइफ सेविंग टेक्निक्स को सिखाया जाता है. यू कैन अप्रोच टू एनी ऑफ द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नियर बाय यू एंड लर्न फ्रॉम देम. ओके, थैंक यू सो मच. व्हाई या, व्हाई आई वाज आस्किंग दैट क्वेश्चन बिकॉज इंडिया में भी मैंने बहुत केसेस पढ़े थे जहाँ पे अचानक से किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, एग्जैक्टली, कोलैप्स हो एग्जैक्टली. गया, कोई somebody perform CPR and they save their lives. Thank you यस, so much, sir and ma'am, for beautifully answer my question. Thank you यस, so much. यस, 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 मोस्ट प्लेजर. Yeah, we can have another person, Rajendra. Rajendra, can you hear us? Rajendra, are we audible? Yeah, I think we can move to the next one. Once he join, we can. Shweta, do Yeah. we have anyone else? No more hand raised. If anyone else wants to ask the question, they can unmute.
Rajendra is Guys, here. you Yeah, can unmute yourself and ask the questions. Rajendra is here. Okay, Yeah. great. गुड इवनिंग ऑल। गुड डॉक्टर इवनिंग। हितेश से मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो हम अभ्यंग करते हैं, जैसे मैं अभी शिरबला ऑयल से कर रहा हूँ वेरी पाम्स में गुड। और फुट बॉटम में लगा रहा हूँ, तो उसका थोड़ा बेनिफिट बता सकते हैं क्या? यूट्यूब पे सर मुझे कोई वीडियो नहीं मिला है इसके रिगार्डिंग। देखिए, ये ऑलरेडी हमने बोल दिया। क्षीरबला तेला एक मेडिसिन है। इसको हम बिना किसी वजह का लगाना शायद गलत है। अगर कोई बीमारी आपको है तभी आप उसको लगाना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कि किसी तेल से कुछ बेनिफिट है हम भी उसको यूज करने लग गए। दैट्स ए रॉन्ग अप्रोच ऑल इन ऑल। फिर भी आप पूछ रहे हैं, इसलिए क्षीरबला इज मेड अप ऑफ क्षीर से ही आप जान रहे होंगे। इट इज मिल्क जी, एंड दूध से। बला इज अ प्लांट। इट्स बॉटनिकल नेम इज सिक्का एसिडा। तो ये एक प्लांट है जो नर्व्स को स्ट्रेंथन करने की काम करता है। तो अक्सर क्षीरबला तेल हम पैरालिसिस या नर्वस न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में हम यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पैर या हाथ में बहुत रुक्षता है, आई मीन टू से एक्सेस ऑफ ड्राइनेस है, जैसे कि आजकल विंटर में होने की, क्रैक्स होने की संभावना है, तब आप यूज कर जी। सकते हो, ओनली एंड ओनली विथ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नहीं, मेरा डॉक्टर। डॉक्टर नारायण लंबोदरी का ट्रीटमेंट चल रहा है श्रीधरियम बहुत से, बढ़िया, तो उन्होंने बहुत बढ़िया। प्रेस्क्राइब किया था। पादाभ्यंग बोलते हैं हम लोग, ये बढ़िया जी। टेक्निक है। हालांकि हमने इस सेशन में उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं किया। इवन आई एम प्रैक्टिसिंग पादाभ्यंगा सिंस पास्ट 10 years। इससे मुझे भी आंखों की चीजों में बहुत सारे फायदा मिल रहे हैं। सो पादा इज फुट, सोल ऑफ द फुट। पाद में कोई भी तेल, हालांकि तिल तेला इज बेस्ट फॉर जी। दिस। डिस्पाइट दैट यू कैन ऑल्सो यूज क्षीरबल तेला। इससे आंखों की ताकत को बढ़ाने की रिसर्चेस हुआ है। सो दैट इज द रीजन वाई बिफोर गोइंग टू बेड, ओके। आयुर्वेदा डॉक्टर्स रेकमेंड टू अप्लाई। हाथ में नहीं है, सिर्फ पाँव में करना होता है। पाद का मतलब होता है मुझे सोल ऑफ द पाम्स फुट। और पाव और हथेली पे भी लगाने का बोला था सर वहाँ। नहीं, लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, लगा सकते हो। वो इंटरप्रिटेशन है अलग अलग। जैसे पाँव में अलग अलग पॉइंट्स है ना। जी। ऐसा माना जाता है कि पूरे जी। पाँव में हमारा किडनी का एक पॉइंट है, लिवर का एक पॉइंट है, लंग्स का एक पॉइंट है, हार्ट का एक पॉइंट है। तो एक्यूपंक्चर यस और सर। एक्यूप्रेशर जो चाइनीज रेमेडीज है, वो लोग सिर्फ पाँव को पकड़ के पूरे बॉडी को मैनिपुलेट करते हैं। The similar points are ओके। also available in the hand if you study more about this in nature cure. नेचर क्यूर में आपको ये acupressure के बारे में ज्यादा डिटेल्स मिलता है। तो ड्यू टू अकॉर्डिंग टू दैट थियरी, इवन इट हेल्प्स द विजन, प्रिवेंशन ऑफ ओके विजुअल सर। डिटोरिएशन इन और रेटिनल सर, डिसीजेस। जैसे अभी विंटर चल रहा है, तो नाइट में सोते समय सर में मस्टर्ड ऑयल लगाना चाहिए या तिल का तेल? हेड में कोई मसाज कर हेड सकते हैं में क्या दोनों आरपी मत लगाओ, पेशेंट? कोकोनट तेल लगाइए। बोथ अच्छा, मस्टर्ड कोकोनट से। ऑयल एंड तिला ऑयल तो बाल के ऊपर लगाना ही नहीं चाहिए, बाल झड़ेंगे। जी। Yeah, there is a clear caution about using till oil over the head. ओके अर्ली ओके ग्रेइंग सर। ऑफ हेयर भी हो सकता है। बेस्ट हेयर ऑयल इज कोकोनट ऑयल या भृंगराज, कोकोनट आमलक। ऑयल। ये सभी तेल है। आमलक इज वंडर ड्रग इन आयुर्वेदा विच कैन प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। आंवला, आंवला बोलते हैं इसको हिंदी में। यस सर, आंवला। इंडियन लेकिन सर गूसबेरी, जो या मार्केट में मिलता है वो तो सारा ही वो फ्रेग्रेंस वाला है, सिर्फ उसमें एक्सट्रैक्ट डाल रखा है, नहीं, आप ओरिजिनल तो अपना कहीं भी नहीं मिल रहा। घर में एक पेड़ लगाएंगे, वो 3-4 साल में फल देगा। मार्केट यस में सर। ज्यादा डिपेंड ना करें। हाँ। तो सर उसका ऑयल कैसे निकालेंगे फिर आंवले का? उसको, उसके लिए आपको बीएमएस पढ़ना पड़ता है। ओके ओके सर। नो यार, देर इज अ सेपरेट प्रोसीजर टू एक्सट्रैक्ट तेल फ्रॉम दैट विच कैनॉट बी डन इन आवर हाउस। उसको पहले ड्राई करो, ओके बाद सर। में, हाँ। इट्स हम्म। ओवरऑल ए लॉन्ग प्रोसीजर टू प्रिपेयर आमला का तेला। ओके। यस, जी। यस, यस, थैंक यू राजेंद्र। ओके, थैंक यू सर। Lakshmi has unmuted. Do you want to ask anything? Yes, ma'am. Good evening. या, गुड इवनिंग Yeah, मैम। good evening. Good evening, Yogita ma'am and Hitesh sir. I have some doubts. या, प्लीज गो अहेड। Sir, we are visually challenged, no? हाँ, You explain, you're telling to do some physical exercises, but एग्जैक्टली। whenever we going to hospitals or anything, they are हम्म, telling to avoid physical exercises because in eye pressure will increase, no? Doing excess physical exercises means. हम्म। So, what is the देखिए, real? हाँ, I got your question. So there is no blanket ban for every visually challenged to practice any physical exercise. सिर्फ और सिर्फ ग्लोकोमा में, जहाँ पे I'm इंट्राऑक्यूलर glaucoma patient, प्रेशर, yeah.
Yes, yes, yes. My vision is a little bit या um या ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि सारे आई साइट बीमारी के लोग एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए। इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ओके। ओनली इन सम ऑफ द आई डिसीजेस लाइक ग्लोकोमा, ये एक है। उसके अलावा भी रेटिनल डिटैचमेंट जैसे बीमारियों में एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज नहीं करना है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन मिनिमम ऑफ एक्सरसाइजेस इज मस्ट फॉर एवरीवन ऑन अर्थ। भले ही वो कोई भी okay, हो, किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, I'm मिनिमम एक्सरसाइज हमको हर दिन करना चाहिए। I'm also suffering from PCOD. ओके। So for this reason, I can't do the exercise. नहीं नहीं, आपको तो पीसीओडी में एक्सरसाइज बहुत मदद करता है। स्ट्रेचिंग अच्छा अब्डोमिनल है, एक्सरसाइजेस। but it will pressures my eyes, na sir. That's why I'm नहीं नहीं, avoiding ये to do. गलत है, गलत अफवाह है। हु टोल्ड यू दैट हु सफर्स फ्रॉम पीसीओडी शुड नॉट डू एक्सरसाइज? इट इट स्ट्रेन्स योर आईज। आपके आंखों में और फिजिकल एक्सरसाइज में ज्यादा आई एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए। देखो, देर इज सम आई एक्सरसाइजेस दैट वी रिकमेंड, लाइक हेलो त्राटक आपने सुना होगा। डॉक्टर थे, सॉरी टू कट यू हियर, बट ओके। आई थिंक उन्होंने मेंशन किया था कि उनको ग्लूकोमा भी है शायद, एंड या दिस डिप्रेशन। लेकिन शिवकांत, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दैट, बट इवन इन ग्लोकोमा बॉडी एक्सरसाइजेस आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आप Okay, जो हमने चेयर पे बैठकर नेक रोटेशन करना, स्ट्रेचिंग करना बोला, वो आप आराम से कर सकते हो। अगर वो नहीं करेंगे ना, तो आपका मोटापा बढ़ेगा, आपको पेट आएंगे। दीज टू आर एंटायरली डिफरेंट थिंग, एंड यू आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मतलब आपको रोक सिर्फ इसी पे है कि आप आई बॉल के साथ कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जैसे कि रेटिनल डिसीज में लोग बोलते हैं ना, ऊपर देखो, नीचे देखो, आंखों को स्क्वीज करो mm-hmm. या कैंडल को देखो। These are all a set of eye exercises which are contraindicated in glaucoma. Whereas physical exercises is a must for everyone. Okay, हाँ, और पीसीओडी एक अलग चीज है। पीसीओडी में सबसे बेहतरीन मेडिसिन एक्सरसाइज ही है, इन माय नॉलेज। okay, आई थिंक योगिता कैन आंसर बेटर ऑन दिस। डॉक्टर योगिता, okay. इफ यू विश टू Yeah. एड सम Uh, insights. yes. About the glaucoma and the physical activities, sir give you Yeah, like yeah, he will give you the right answer. About the PCOD, it is the primary cause for the PCOD is that fat deposition in and around our waist, especially. So I might say that. Uh, I mean, carbohydrated diet you take, and yes, physical activity is really must. What's said, physical activity is a key role in avoiding these type of, especially PCOS or the PCOD, exactly. type of health Yes, yes, issues. thank you, Yogita. Okay. Thank you, Thank sir. you, Lakshmi. Guys, I have a humble request. Can we have And some generic questions and yeah, bit shorter? And ma'am, for exercise, like you can come tomorrow and you'll get Yeah, better. Like what yeah. exercise yeah, will you do? yoga. Yeah, with the help of yoga. Yeah. Do I we think have we have anyone with exceeded the more time. generic Yeah, questions? yeah. Yes, yes, yes. We have Shyam. He has raised his hand. Sham, can you hear us? Yeah, Sham, Michelle. you can unmute yourself. You can ask the question. हेलो। Yeah, you are audible. Go ahead. हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सपोज जैसे मॉर्निंग में तो मैं जब मतलब ब्रेकफास्ट तो हैवी ही करता हूँ जनरली, रोज़ खाना ही खा के जाता हूँ, फ्रूट्स और फिर खाना खाता हूँ मैं। तो दोपहर में जब मेरा मतलब बैंक में हूँ मैं, तो बैंकिंग में एक्चुअली जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत टिपिकल हैं, एक्चुअली क्रिटिकल वर्किंग आवर्स हैं वो। तो सुबह 9 बजे खाना खा के जाते हैं, तो सीधा 2 से 2:30 के आसपास ही खाने को मिलता है। तो मैं 2 से 3 चपाती ही खाता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने महसूस किया है कि दिन में जब खाना खाता हूँ तो बहुत हैवी सा महसूस होने लगता है आधे घंटे बाद से ही, और उसके बाद में थोड़ी नौजिया सी फील होने लगती, नींद आने लगती है, और ब्रीदिंग में भी थोड़े से इश्यूज आने लगते हैं। तो ये दोपहर में खाना खाने की वजह से ऐसा है, या मैं मतलब जैसे खाना जब ठंडा हो जाता है घर से लेके जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो या उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? मैं ये अभी तक मतलब ट्रबल शूट नहीं कर Okay. पाया हूँ, क्यों हो रहा होगा ऐसा? No, I got your point. I think it is totally individualistic.
Will you prefer answering it personally to you, or shall I answer here itself? No, you can answer openly. No Okay. problem. Yeah, no issues. If in case it might be the problem of many people who work in bank. See, देखिए, खाना ऐसा कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं खाना चाहिए. मतलब योर बॉडी इटसेल्फ इज अ गाइड रिगार्डिंग हेल्थ. इट एक्ट्स लाइक अ कंपास. जब भी बॉडी आपको मांग मतलब जरूरत होता है तब वो मांगता है. और जब भी आपको खाना खाते वक्त, नाउअडेज इट इज वेरी फेमस द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुल ईटिंग. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर हम क्या करते हैं, खाने के वक्त किसी से बात करके खाते हैं, या मोबाइल में रील्स देख देख के खाते हैं, या कोई टीवी में मूवी चल रहा है और हम इधर बैठे बैठे खा रहे हैं. दैट शुड नॉट बी द केस. दिस इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द डायटरी इनकंसिस्टेंसी इज हैपनिंग. तो हमें क्या करना होता है, माइंडफुल होकर के हर एक बोलस बोलस मतलब हर एक बाइट ऑफ द फूड को चबा चबा के अच्छे से महसूस करके खाना होता है. Then only your the you know why you are feeling nausea, why you are feeling heaviness is all due to this. मतलब आपके स्टमक को बहुत भारी पड़ रहा है. You are not chewing the food properly. Directly the entire food is going into the stomach, and there the digestive enzymes, the digestive secretions are unable to digest it properly. एक चीज है वो हैवी फूड ले रहे हैं आप, दूसरी चीज है उसको आप माउथ में अच्छे से मिक्सअप नहीं कर रहे हो सलाइवे के साथ, या देखो, डाइजेशन में बॉडी के हर एक पार्ट का रोल होता है. वी हैव टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, कैनाइन, इंसिजर, मोलार, प्रीमोलार, हर एक टीथ का रोल है. और वी हैव secretions इनसाइड आवर माउथ. वी हैव पेप्सिन, ट्रिप्सिन. वी हैव जो होठ, आई मीन टंग, टंग को जीभ बोलते हैं ना, या जीभ के ऊपर जो भी secretions है, ये सारे हमारे डाइजेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. इफ यू मिस आउट एनी ऑफ दिस थिंग्स, अगेन वो हमें भारी पड़ेगा. शायद आपके केस में भी यही हो रहा हो. आप शायद टाइम की कंस्ट्रेंट से या प्रेशर से बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो, और वो ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा है, और आपको वो तुरंत नौजिया का फीलिंग करवा रहा है, हेवीनेस की फीलिंग करवा रहा है. और जो आप दोपहर बताया आपने, ठंडा हुआ रोटी को आप खा रहे हो, डेफिनेटली अगेन आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है. तमस एक गुण होता है. जो ठंडे पदार्थ होते हैं उनमें तमोगुण वृद्धि हुआ रहता है. दैट विल मेक यू स्लीप. तो हमेशा आयुर्वेद कहता है फ्रेशली कुक्ड फूड को ही कंज्यूम करना है. लेकिन आप इनोवेटेबल हो सकता हो, आप घर से ले जाते हो और दोपहर को ही खाते हो. हॉट बॉक्स जैसे मिलते हैं आजकल, प्रिफरेबली यूज दोस हॉट बॉक्स एज योर टिफिन. और आजकल एक इलेक्ट्रिक का भी एक केटल जैसा टिफिन बॉक्स है, जिसको आप ले जाओगे और दोपहर सिर्फ 2 मिनट स्विच इन कर दिया तो वो फिर से गर्म होगा. You can find out some these kind of course all these are not absolutely recommended, but you can find out some solutions. Workplace solution कहते हैं ना इसको. तो इनकी जरिए आप योर डाइजेस्टिव कंप्लेंट से दूर हो सकते हो. हेलो सर, जस्ट अ मिनट, वन मोर या क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस. यस. मैंने एक चीज़ मतलब महसूस तो की है, जैसा आप बता रहे हो कि मुझे कई बार जैसे जैसे गले में शोर से लेके चेस्ट तक शोर होता है जैसे खाना खाते हैं. हाँ लेकिन हाँ जब मैं अच्छे से चबा के खाता हूँ उसको, एक एक बाइट को, हाँ. मतलब छोटी छोटी बाइट्स लेके, हम्म. तो मुझे वो चीज़ नहीं होती है. मैंने ये चीज़ मतलब एग्जैक्टली 20 से 25 दिन ऑब्जर्व एग्जैक्टली. किया है. एक ये जो चीज़ और आप इसमें मैं ऐड बताया ना. करना चाहूंगा, जस्ट मिनट, फॉर जस्ट मिनट, कि आप अच्छे से आंसर कर सको मुझे. यस इसलिए मैं यस एक यस. चीज़ और ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि मुझे एक सोल्यूशन और दीजिएगा. जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं अच्छे से खा रहा हूँ खाना, लाइक अच्छे से बाइट को चबा चबा के, छोटी छोटी बाइट्स लेके, तो मैं क्वांटिटी ऑफ फूड बहुत कम खा पा रहा हूँ. लाइक जैसे मुझे आधा घंटा लग जाता है 3 चपाती खाने के लिए या 3 पराठे खाने के लिए. तो वही मैं महसूस करता हूँ कि यार उस 20 से 25 मिनट में मैं 5 चपाती खा लेता हूँ. तो वो उसको हम सॉर्ट आउट करने की, फिर बाद में इसे भूख लगने लगती है, इसे क्वांटिटी कम होती है, तो बाद में एग्जैक्टली. वो हंगरी फील होने लगता है. तो उसका हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो हम एग्जैक्टली. टाइम भी हमारा बचे और हम उसको अच्छे से चबा भी लें, तो क्या एग्जैक्टली. हम कर सकते हैं उसके लिए? May I know your BMI, श्याम जी? If you don't mind telling it. BMI मतलब बॉडी वेट कितना है आपका, बता सकते हैं? बॉडी वेट मेरा 64 to 65 रहता है सर. आपका हाइट? हाइट मेरा 5.2 है. 5.2 इज ऑलमोस्ट 1.6 और 1.5 मीटर्स. 150 to 160 के आसपास होंगे आपका हाइट. यस. जिस प्रकार आपका BMI 23 या 22 के आसपास आ सकता है. देखिए, ये आपने पहला चीज कहा, जो गले में जलन जैसा महसूस होना, दैट इज कॉल्ड GERD. इट्स अ डिसीज एक्चुअली, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर. वो आपका एक अर्ली साइन है. आपके पेट में मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम टोटल खराब हुआ है, उसका एक साइन है वो. तो उसकी सॉल्यूशन तो तीन चार है, जैसे कि आपने ही एक निकाल लिया कि आपको
धीरे धीरे चबा चबा के पूरा महसूस करके खाना होता है। महसूस करना एक चीज है जो हम मिस आउट करते हैं। जो भी आप खाते हैं ना, यू शुड एंजॉय द फूड। दैट इज कॉल्ड एज माइंडफुल ईटिंग। अगर आप टाइम की वजह से, या आपको फिर से मीटिंग में दौड़ना है, या दोपहर को आपको लंच ब्रेक कम ही मिला, तो ये सब चीजों से आप कम खा पा रहे हैं या गड़बड़ में खा पा रहे हैं, तो जरूर आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का शिकार बनेंगे ही बनेंगे। सो कीप योर हेल्थ एट हाईएस्ट प्रायोरिटी। भले ही कुछ भी हो, आप जब भी खाएंगे आप आराम से सांस लेके, आराम से एक शांत प्रदेश में बैठ के, आराम से आपके खाने की चीजों को महसूस करके खाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आपने बताया आपको बहुत देर लगता है। कोई बात नहीं, आप टाइम एडजस्ट करो। लेकिन ये भी गलत है कि आप सिर्फ 3 पराठे खाने के लिए आपको आधा घंटे लग रहा है। और जहां पर मेरी एक्सपीरियंस है, देर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स्ड क्वांटिटी टू एनीवन। ऐसा नहीं कि हर एक को दिन में इतना ही खाना है, कि 3 ही पराठे खाना है, पराठे खाने के बाद चावल भी खाना है, ऐसा नहीं होता है। इट इज वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। कोई सिर्फ एक पराठा खा के दिन भर हेल्दी रह सकता है, लेकिन कुछ लोग 4-5 पराठे खाने के बावजूद वो अपना टारगेट नहीं पहुंच पाते हैं। तो लीव अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द फूड। आपका बॉडी जितना मांग करेगा उतना आप दे सकते हो। आई मीन टू से, Okay. इफ यू फाइंड हेल्दी इन बिटवीन ऑल्सो, यू कैन गिव सम फूड वेन एवर यू फील हंग्री। Okay, sir. Thank you so much, ओके, sir, for your ओके, ओके। advice. Thank या, you so इट्स माय much. प्लेजर। I believe they were great insights और I think श्याम जी का क्वेश्चन बहुत लोग relate कर पाए होंगे, what I believe. Shraddha, do we have anyone else in the queue? No more hand raised. If anyone else is there, they आई can थिंक ask. वी कैन स्टॉप। Yep. So I Okay. think we are गुड टू towards वाइंड the अप। end. Yeah. So once again, thank you, Dr. Yogita. Thank you, Dr. Hitesh. And I believe you have cleared the queries in very good detail. And so, talking about tomorrow's session and day after tomorrow, as we have touched the topic of exercise and again, meanwhile, in today's session. So, I would like to tell you guys that tomorrow the entire session is based on yoga, the aspect of exercise that we are discussing today. Because, जैसे कि doctors ने बताया अभी, एक single चीज won't work. You have to blend your diet, your mental health, and your exercise. So, with the same idea, with same agenda, we have curated this workshop. तो Yeah, अपना and बिलीव and वही and है. Tarushi, sorry to interrupt. And moreover, the speaker for tomorrow is an international speaker. She is the pride Right. of our visual challenge community. Despite being blind, she have traveled across the world in propagating the knowledge of yoga. So I think tomorrow's session would be very special and very must for all the visually challenged. Yep. So to add on to this, ma'am will be giving some verbal commands so that we won't able. So इशू होता है हमें कभी कभी समझने में कि इंस्ट्रक्टर किस तरीके से पॉस्चर्स बना रहा है. सो मेन कैच वही है. मैम गोना टेल यू द पॉस्चर्स एंड वर्बल कमांड्स. शी गोना करेक्ट यू. सो try to come up with your yoga mats. Keep your cameras on to make best out of it. And we believe yoga से ही होगा at the end of the day. तो try to make part of life ayurveda yoga and start focusing on mental health, because अगर आप diets के और exercise के पीछे भागते रहोगे, you won't focus on your mental health, mental well being. तो मुझे लगता है ये चीजें भी won't result anyway. So, yeah, this is it. Tomorrow would be yoga. Day after tomorrow, that's 26th, we will be having a mental health specialist. So, do try to bring up you on these two sessions. Try कि 1-1.5 घंटा अपना आप निकाल के चलो, book your sessions tomorrow and day after tomorrow. And Dr. Yogita, Dr. Hitesh, would you like to add something? No, thank you so much for the opportunity, Tarushi. It's always a pleasure to speak to DivyaAbility Foundation. You people are, really doing great. So we will be always there with you. And thanks a lot for the opportunity. Thank you so much. Thank you, Dr. Yogita. Thank you, Dr. Hitesh. The pleasure is ours. And so I hope we gonna see you tomorrow. Yes, Till then. yes, yes. Okay, till Thank you. then. Bye Thank bye. you. Bye bye. Good night.